Assalamualaikum. I know you don't want to see me, but अनफॉर्चुनेटली मुझे आना पड़ जाता है अक्सर औकात. ठीक है, सामा मेरे साथ बैठे हैं. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. फुटबॉल के बाद डाउन तो गए होंगे, है ना? मैं तो उसके बाद आपसे अभी मिली हूँ, तो मैं इसलिए, लेकिन हम उसी जोन में हैं. वैसे खुशी हुई आपको जो एंड हुआ? अच्छा फाइनल था. हाँ, एवरीवन वाज हैप्पी. फ्रांस वाले भी खुश हो गए कि अच्छा. हाँ, और अर्जेंटीना मेसी वर्ल्ड कप जीत गया, तो of course हैप्पी एंडिंग. It was a dream come true, especially for Ahmed Naqvi. We cannot stop mentioning him. वो हमारी जिंदगी का एक वो हिस्सा बन चुके हैं. Whenever we talk about football, it's always Ahmed Naqvi there. And especially that his line for Messi after like मुझे वो जो that went viral and that was beautiful. That was beautiful. That was very moving even for a person जिसको फुटबॉल बिल्कुल समझ नहीं आती है. लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस चेक करो कि मैं इतने करंट किया आई हूँ. However, स्टार्ट जो है हम ट्रिब्यूट से करेंगे. Pele जो है, he passed away last night. He was battling cancer for the longest time. And despite वो जैसे कहते हैं ना मौला जट की लाइन, वो कि नवाया सोनिया, everyone is familiar with that line and मौला जट. ठीक है, इसी तरह फुटबॉल में आके आई नो यू विल किल मी ऑन दिस रेफरेंस, लेकिन पहले एक ऐसा नाम है जिथे बैठो ना वो बंदा शुरू हो तो ओदी गेम देखी सी, लुक सो ओल्ड एंड एवरीथिंग एल्स. तो मैं अब इनसे बहुत सारी बातें इस बारे में करूंगी. पहले तो आप ये कहें कि मुझे ये बताएं कि हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम क्रिटिसिज्म एंड सम मिथ्स. सारी डिटेल में आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या सीन था. सो वन कॉमन मिथ अबाउट हिम इज कि ही प्लेड अगेंस्ट वीकर टीम्स. इज इट ट्रू? No, it isn't true because पहले जिस एरा में खेल रहे थे, क्योंकि एक समझा जाता है कि यूरोप में अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो वही कंपेटिटिव होती है. लेकिन फ्रॉम 1958 टू 1970 4 वर्ल्ड कप्स हुए, उसमें से 3 ब्राजील जीता था. एंड ही वाज पार्ट ऑफ ऑल दोस 3 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स. सो और जो ब्राजील की जितनी विनिंग टीम थी वो बेसिकली all played in Brazil. Okay. And many other players who were of good caliber also played in Brazil. So वो myth सिर्फ गलत है कि पहले played against weaker teams या anything. Because जो ब्राजील की टीम थी, जो तीन वर्ल्ड कप जीती थी, it had all excellent players. और many other players also went to Europe basically to Brazil to play in the Brazilian league. Like that was the quality of Brazilian league. तो ये गलत मिथ है. ये सिर्फ वो because European discourse जो है वो dominate करते हैं और वो होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि one of the myths it is, but it's not true. तो ये मतलब फिर अहमद ठीक कहता है ना जब उनके अगेंस्ट पे बात कर रहा होता है कि मतलब दे जस्ट वो गेट कीपर्स नहीं है जैसे कि गेम के कि ये हमारी गेम है, तो बस यू नो वो ऐसी वीकर टीम्स के अगेंस्ट था. And one of the reasons that he could not go to play in a European club was because he was declared a national player by the Brazilian government. Okay. National player declare कर दिया था, तो national player का मतलब है कि आप अपने मुल्क से बाहर किसी और मुल्क के लिए जाके कोई भी चीज कर सकते हैं. Oh my God! He was declared as a national player by Brazilian president in 1962. And ये जबरदस्ती हुआ था, उनसे कंसेंट ली गई थी कि बस कहा था कि तू नहीं जाना. No, like he was so popular and he was so much loved in Brazil. और वो इतना चाहते थे कि हम अपनी, क्योंकि उसको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स आई यूरोपियन क्लब्स की तरफ से कि आप यूरोप आ जाएं, आपको नेशनैलिटी दे देंगे, वो सब कुछ. लेकिन उसको रोकने के लिए he was declared a national player by Brazil. This was the sort of love and relationship he had with Brazilian people and the country. और लेकिन उसके बावजूद ये जो कहते हैं कि he did not played against European teams, ये भी गलत है. He played against European teams. Okay. और यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने 130 मैचेस खेले और उसमें से उन्होंने 144 गोल स्कोर किए, which is an astonishing record. It is. And although वो जो games थे for his club Santos for which he played and they went to Europe and वो कहते थे कि जी friendly matches होंगे, but they were not friendly इतने. Like कहने को friendly नाम था, but they were very competitive. And they were played throughout Europe. उसमें Italian teams भी थी, Spanish teams भी थी, English, French, Portuguese, every European team, and he did well all of them against. Okay. So मतलब ये भी कहना नहीं है कि जो यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट ही खेल रहे थे. And if you say कि जी club level में the competitiveness was not there, but when you come to his World Cup records, it's as good as his record in club football. Like he played 14 games, he scored 12 goals, and those 12 goals did not include any penalties.
and he had 8 assists as well. Wow. So like that tells you about the stature of a player. Exactly. Like, for instance, बंदा मान ले कि जी क्लब फुटबॉल में वो लेवल नहीं है, तो how can then that same guy is translating that at the World Cup level? So that basically वो सारी उनको कर देता है counter. सही. And he was as good like a lot of young players. Messi was very good when he was young. Neymar was very good. Cristiano Ronaldo, Rooney, ये सब बहुत अच्छे young खिलाड़ी थे in their early years. But Pele stands above them all. Like by the age of 24, he had scored 602 goals. Like that's astonishing. When did he start playing? What is wrong? What was wrong with him? I mean, wow. He played when he started playing was 17. That's still a lot of goals. Even if you start at 17, I mean, I would think कि कोई 12 साल का लड़का जाके तो तब से खेलना शुरू किया होगा. But 17 to 24, 6 or 5 goals, that's too much. Absolutely. Wow, तो स्टेचर पे आके तो फिर वो तो बाकी नेशनल ट्रेजर थे, which actually made me think about Elvis Presley कि जब when he got very popular, मैंने उसके भी वो बायोपिक ही देखी थी. He got very popular तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया था वो होटल वालों ने कि अब तुम कहीं और जाके परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, he couldn't go to Japan and he couldn't go anywhere, and that depressed the shit out of that guy. ठीक है, वो कहीं नहीं जा सके थे. तो लेकिन फिर भी इस लेवल पे जाना डिस्पाइट नेशनल ट्रेजर एंड एवरीथिंग, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. एंड लाइक जो पहले का सबसे बड़ा जो चीज थी कि एक तो वो अच्छी फुटबॉल खेलते थे, टेक्निकल एबिलिटी तो सब कुछ थी, लेकिन जो उससे भी चाह के ट्रांससेंडेंट बाउंड्रीज. लाइक उनका अफ्रीका पे जो इम्पैक्ट था दैट वाज ह्यूज. लाइक देयर इज सेड कि नाइजीरिया एंड कॉन्गो के दरमियान वॉर चल रही थी, बट व्हेन पेले वाज टू टूर तो 2 days के लिए सीज फायर वहां पे हुआ, so that all of them could watch Pele play. Oh my So like God. that tells you about ke how big an impact, like everybody wanted to play like Pele, and that's from where the Brazilian tradition of playing that beautiful football, eye-catching football comes in. Wow, that is so fascinating कि मतलब जंग उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक दी थी. तो यहाँ पे भी कुछ होता है, मतलब इधर भी शायद कुछ रुक जाता है. वैसे तो इधर कुछ हो ही नहीं रहा होता. We will come back to that as well कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, वो तो खैर दूसरी बात है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि there is another criticism that on Pele कि he played as a number 9. No, like basically जो पहले की सबसे important चीज़ है कि he made the number 10 शर्ट नंबर 10 आइकॉनिक. Okay. उसके बाद से हर जो बड़ा खिलाड़ी था उसके बारे में था कि आई वांट टू वेयर दैट नंबर 10. Wow. लाइक मैराडोना, मेसी. सो बेसिकली जो नंबर 9 होता है वो मेन स्ट्राइकर होता है, और नंबर 10 प्लेज एज अ सेकंड स्ट्राइकर जो कॉम्प्लीमेंट करता है नंबर 9 को. तो जो नंबर 9 स्ट्राइकर होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो बेसिकली ये होती है कि उसको गोल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं. नंबर 10 इज मोर ऑफ इन द प्ले मेकिंग रोल. गोल भी करता है बट ही इज इन द प्ले मेकिंग रोल. लेकिन पहले did not only play as number 9 but he more of made the number 10, like he was this good कि he did not need to play number 9. सही. Like he playing number 10 he scored as many goals as a number 9 would score. सही. तो ये नंबर्स का वैसे क्या सीन होता है इसके अंदर? Like is there a special position for number 10? No, it's not, but over the years it has become that associated with certain positions okay. forwards yeah, striker. They are the stars and more of dominate the game, goal ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से there are particular numbers that have been associated. रोनाल्डो का भी कोई नंबर था? 10 था, क्या था? 7 था? वो तो 7 था ना? अच्छा, वो 7 पे था. He also created a the Brazilian Ronaldo. हाँ, वो 10 था. वो नंबर 9 था. number अच्छा, नंबर 9. And Messi was? Messi number 10. Messi number 10 है. He proved it वैसे with the win and everything. अच्छा जी, बाकी तो ये पॉइंट्स इसमें आपने यूरोप के भी कवर कर दिए हमें, लेकिन एक चीज़ है कि another myth के that he was good because of the era he played in. No, like how true is that? I don't think so, because हमने अभी बता दिया है कि जो गोल स्कोरिंग एवरेज थी उस टाइम पे, वो कहते हैं कि जी शायद ज़्यादा थी इस टाइम से. उस टाइम पे कम थी, इस टाइम पे ज़्यादा है, तो दैट्स वाई, बिकॉज वो क्वालिटी उस तरह नहीं थी. पर अभी जो इन द मॉडर्न फुटबॉल, बिकॉज अटैकिंग फुटबॉल ज़्यादा होगी और पुराने टाइम पे फाउल्स ज़्यादा होते थे या वो वाला चक्कर था, लेकिन सिर्फ जो स्कोरिंग रेट है इट हैज गॉन ओनली अप 5% इफ यू कंपेयर इट टू दिस डे एंड एज. तो इतना 5% इज अ वेरी निग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन दैट डे एंड एज एंड दिस टाइम. सो इसलिए इट वुड नॉट मेक एनी सेंस
के saying कि he was good because of the era he played. मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को उनको था कि ये खुद इसके अंदर कोई काम की बात नहीं थी, बाकी सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे थे. And you have got to also factor in the point that in the era that Pele played in was an era where a lot of fouls used to happen. Okay. Like in the Copa America of 1959, he was fouled 16 times per match. 16 times per match, and if you compare it to in the 1986 World Cup to Maradona was fouled 7 times. And in 2020 World Cup per match, and in 2022 Messi was fouled 3 times per match. Wow. So like he was fouled 16 times per match. So it tells you के how difficult it was कि referees biased होते थे, इतनी वो कोई checking भी नहीं होती थी, so you could foul anyone and get away with it. और 1966 का वर्ल्ड कप के लिए भी ब्राजील की टीम थी, वो बहुत अच्छी थी, पर they were knocked out in the first round because they were fouled too much. Okay. And उसकी वजह से फिर 1970 के वर्ल्ड कप में रेड कार्ड का भी इंट्रोडक्शन हुआ था. So that you could send out players. अच्छा, उससे पहले नहीं था. उससे पहले नहीं था. अच्छा. So that के उसके बाद जो players हैं उनको रेड कार्ड का डर हो ताकि they foul less and a more fair game happens. Wow, that's a lot of interesting information and I hope कि आपको भी मजा आया होगा ये सुनकर. Great tribute to Pele, I guess. मुझे भी बहुत कुछ पता चल गया. नेशनल ट्रेजर पे आके तो मेरी सुई अटक गई है. I want to be a national treasure as well. लेकिन वो इसके साथ साथ मुझे कहीं जाने भी दे. मैं कहा अब तुम चली जाओ. हमें ये ट्रेजर नहीं चाहिए, बस ना दिया. So who wouldn't want to be in that position? Of course, ठीक है. Everybody would love to. Yes, exactly. तो वो खैर मेरी ख्वाहिश है, पूरी नहीं होनी, of course. तो नेशनल एथलीट भी नहीं समझते मुझे. तो खैर, anyway. अच्छा जी, that was football. And now we'll move to cricket, जो कि आप लोग obviously बहुत ज़्यादा interested होंगे. लेकिन उसमें सबसे पहले an unfortunate news is कि ऋषभ पंत का accident हुआ है. वो गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए हैं. उन्होंने कहा था serious injury, but he's out of danger. And that immediately reminded me of Michael Schumacher. Yes, absolutely. जिसको 9 years, it's been 9 years, we don't have any update over कि वो जो accident उनका हुआ skiing में. How is he doing? Where is he? The family is just so private about the entire affair. So ये जो tragedies होती हैं ना, like बंदा ना हिल जाता है एक दफा sports में. One of the major things about such tragedies is that जो external injuries तो जो भी होता है, internal injuries are sometimes far more damaging than the external ones, because on first viewing you might look like he's normal and everything, but you never know के the internal injuries या उनसे क्या impact होगा. So we hope that there are no serious internal injuries and Rishabh Pant gets to recover as soon as possible, or we wish him a speedy recovery. Yeah, and he also gets out of the mental trauma one goes through these after these accidents, because गाड़ी का बहुत बुरा हाल था. Because it really affects players, उनकी performance. और उसके बाद because I remember Ahmed Shehzad got hit on the head in 2014 in a test match, and after that he was never the same batsman that he used to be before that, although not a big comparison to make. नहीं, अब क्या करें. नहीं, शहजादियन still want him back in the team. आप ये ना समझे कि उनके fan boys या fan clubs खत्म हुए हुए हैं. शहजादियन still exist. लड़के लड़कियां दोनों. तो होप्स हमारी हर वक्त होती हैं, क्योंकि जो अब सेटअप चेंज हुआ है, अब हम आ जाते हैं अपनी बहार पे, ठीक है, जिसमें आपको गाली देने का और ओपिनियन देने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा. वो ये है कि जी सेटअप चेंज हुआ है, रातों रात चेंज हुआ है, ठीक है, और सब कुछ वो आ गया जिसका कभी सोचा नहीं था कि फिर से यही सब कुछ हो रहा है. एंड और नॉट ओनली दिस, लास्ट टाइम व्हेन वी मेट और हम शो कर रहे थे तो हम एक सीरीज हार चुके हुए थे. एंड नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग अनदर टेस्ट मैच, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो ये वो जो ना ये जो वंडी छेड़ी हुई है इस टाइम पे कि तुसी भी ले जाओ, तुसी भी ले जाओ, तुसी भी ले जाओ. हम बंद ना करा दें क्रिकेट. मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बदतमीजी है. It was one of the years like I was most looking forward to in terms of test cricket. है ना? कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट होगी और अच्छी टीम्स आएंगी. ऑस्ट्रेलिया आना था, इंग्लैंड आना था, न्यूजीलैंड, और I was finally looking forward कि we will dominate them at home and beat the shit out of them. इससे पहले तो ना आते. Yes. वो टाइम ठीक था. Yes. And like we are almost
into the third series and we have not won a single test match at home. और नहीं, मजे की बात ये कि we are on the verge of winning as well, but we take it back. We take it back. We're like, नहीं, you are playing very exciting cricket, as Ramesh Raja, a former PCB chairman, used to say. बड़ी exciting cricket खेल रहे थे वो, ठीक है? तो that's how we wrapped up, and we blamed Kudrat for most of the things, and now the setup has changed, and मैंने उसमें ये बात करनी थी कि सेटअप चेंज हुआ तो हमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि चीफ सेलेक्टर आए हैं, मे बी थोड़ा कोई डाटा स्टैट्स के ऊपर बात होगी. Why don't we choose people based on the performance of the format? Yes. ठीक है, मतलब जो फॉर्मेट खेला हुआ है उसकी परफॉर्मेंस की टेस्ट मैच खेलेगा तो ओडीआई पे तो नहीं ना आप करोगे. Why are we doing this? Which की प्राइम एग्जांपल इज फखर जमान. लाइक वही हमारा मसला है कि एक तो हम कंफ्यूज रहते हैं ऑल द टाइम. एक तो जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी उसके आप अगर थोड़ा जो मोहम्मद वसीम के जब चीफ सेलेक्टर थे, यू कुड क्रिटिसाइज हिम के इन सम वेज के उन्होंने गलत सिलेक्शंस, एक दो क्वेश्चनेबल सिलेक्शंस की थी, बट ओवरऑल यू कुड से के अच्छी टीम्स पिक हो रही थी. Of course, yes. बट जो उससे भी ज्यादा मसला मुझे लगता है कि हम राइट साइड ऑफ पीपल नहीं खिलाते टीम में. लाइक हमारे 15 का स्क्वाड ठीक है, बट अब वी नीड अ स्पेशलिस्ट नंबर 3, बट वी विल से नो, वी विल मेक बाबर बैटर नंबर 3 आवर बेस्ट बैट्समैन. लाइक सारी दुनिया में होता है कि जो आपका बेस्ट बैट्समैन होता है वो in test cricket especially bats at 4, and number 3 is a specialist position where someone who can ding it deep and play long can come in. But we don't do that. Similarly, we have a bowling problem. Like हम 20 wickets नहीं ले पा रहे पिछले 4 टेस्ट मैचेस में. The problem हम कुछ नहीं ले पा रहे हैं. Like we have not been able to take wickets. After Abrar's spell, I don't remember taking any wickets. And what we do is that we play an all-rounder in the disguise of that he'll ball spin, but it does not end up balling any spin. Yeah. So like we rather than we do the fixed thing, we play the bowlers in the right places, all-rounders who can ball, we are not doing that. And it is obviously reflecting in the team's performance. Of course, वो तो नजर आ रहा है. और अभी जिस तरह ODI squad भी was तो बिल्कुल ही लग रहा था आफरीदी batting like reminded of his batting just on vibes. Yeah, on the whim. He just felt like मुझे अच्छा लग रहा है, इसको डाल देते टीम के अंदर. Like I'll bring in Shajil back as well. Bring in Umar Akmal, Kamran Akmal, Ahmed Shahzad. Let's do this. मैं कहती हूँ कि एक दफा आप ये करके देख लें, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है. मतलब हमारे लोग हैं ना, हम तुमको बर्दाश्त कर लेंगे, फिर वो जो रिजल्ट्स आएंगे ना उसको फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है. तो ये तो है वो टीम सिलेक्शन का था. नाउ कंसीडरिंग दिस टेस्ट लॉसेस जो चले जा रहे हैं उसके अंदर, डू यू थिंक द पिचेस आर आल्सो प्लेइंग द रोल? यस, पिचेस आर लाइक साउथ अफ्रीका केम टू पाकिस्तान इन 2021 and we played a test series against them and we won it 2-0. And those were the perfect pitches that you needed, which had enough grass on them as well that fast bowlers could have had. ये तो कबर लगती है. And spinners also would appreciate help from it. But what has happened is that we have in search of like Australia की टीम देख के, इंग्लैंड की टीम देख के कि अगर we create seaming pitches तो हम हार जाएंगे, या अगर जरा सी भी घास होगी तो वो पता नहीं हमें खा जाएंगे या क्या करेंगे, हमें ये डर लगने लग जाता है. So what we did was we prepared flat out roads. वो फ्लैट आउट रोड्स ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में हुई थी कि हम वहाँ पे यूज करेंगे रिवर्स स्विंग और वो सब कुछ. लाइक बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव दोस बॉलर्स एनीमोर who know the art of exploiting the reverse as they should. So Australia series went away like that. So once we came to the England series, we thought now we'll make rank turners where ball will just keep spinning. और वहाँ पे भी वही हुआ. क्या मिल रहा है उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा, और वहाँ पे भी आपको टीम्स आउटप्ले करेंगे. हाँ, बिल्कुल. So basically fast bowling resources जिस वक्त आपके पास हैं, which are comparatively better in the past few years, like अच्छे bowlers हैं, but what you did was you played Naseem and Haris Rauf on that windy road and they got injured, and by the time now that you are into the other test matches, they are not anymore to play. Absolutely. Like, so now you all have fast bowlers like Mir Hamza. No offense to Mir Hamza. नहीं, offense नहीं है. It's just that कि मुझे फौरन Google करना पड़ा था कि who is he? Yes, and they don't have the pace and that skill level that Haris Rauf or Naseem Shah or Shaheen have. And you can't really rely on Abrar or Nomi Cobra for everything to happen. Like Ibrar bowled
67 overs in the first innings of this test match. Allah Like that's insane. That's insane. What do you want from him? उसको तो गोटे खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी. Yes. And then we will look at के what happened to Ibrar. Ibrar को क्या हो गया? हाँ, फिर वो प्लेयर मैनेजमेंट और फिर वही रोला होगा एंड फिक्स आपने कुछ नहीं करना होता. अच्छा, सो इसी के अंदर मैं ये बता दूं कि जो सिलेक्शन कमेटी एंड एवरीथिंग जो वो सारा चेंज हुआ था. सो वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ पीसीबी, नाम मैं उनका ज़रूर लूँगी, शकील शेख की तरफ से काफ़ी रेसिस्ट कमेंट आया है अबाउट द टीम फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. एथनिक उनकी डिग थी. मैं रिपीट नहीं करूँगी, आपने अगर गूगल करना तो कर लें, मैं इस तरह की बातें भी रिपीट नहीं करती हूँ. Do you think this is the right time to actually bring in your ethnic background into question? This is one of the most united Pakistani teams that has existed. Yeah. And they are from everywhere in the country. You have Karachi boys, you have KP boys, you have Punjab boys, you have a complete mix of players. And they are as united as they have ever been. And why you are trying to create unnecessary controversy and problems around it, that कि जी इनफाइटिंग हो रही है टीम में, या कैप्टनसी का इशू है, या फलानी एथनिसिटी का प्लेयर क्यों है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स वेरी बैड. एंड इवन दैट कि उन्होंने एक बात कह दी है, तो उसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन लाइक नजम सेठी, जो चेयरमैन है, that he would take action against such people, या he would stop them from, या ट्वीट ही कम से कम डिलीट कर दें. पर उनकी वो ट्वीट अभी तक है और लोगों ने उन्हें गालियां भी दी हैं और बुरा भला भी कहा है. वो टेंशन मिल रही है ना, नया वो उनको मौका मिला बोलने का, उनका टेंशन मिल रही है. He's enjoying it. It's absolutely creating a problem out of nothing, जिसकी कोई जरूरत नहीं है. सही. Anyway, लास्ट जो बात है वो है अबाउट गोइंग बैक टू द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें we are going from 16 to 16 team regional, and under them there are departmental teams. Like ये 6 से 16 का jump, क्या मकसद है इसके पीछे? हमारी हम 2 extremes के दरमियान रहते हैं. यहाँ हमने 6 teams पे चले जाना है, यहाँ हमने 16 teams पे चले जाना है. There is no in between. क्या करना क्या है ये सब कुछ create करके? Employment? That's what say कि काफ़ी लोग जो पुराने जब नया सिस्टम आया था तो काफ़ी लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे, तो हम वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करने के लिए दोबारा एक ज़्यादा टीम्स बनाएंगे. But like the main thing, the 6 teams concept was good in the sense कि the motive behind it was that cricket should be competitive. Because when the domestic cricket will be competitive, तो आप जब international cricket में आएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. लेकिन उसमें था कि पाकिस्तान is a country of 220 million people, so we need more teams than 6. So right number would have been 8 or 10. Yeah, not 16. Not 16, but we go directly from 6 to 16. And I just can't make any sense of it. जहाँ पे आपकी नेशनल टीम का ये हाल हुआ है, ये 16 टीमों को आप लोगों ने कैसे मैनेज करा? I have no idea. But whatever the motive is and whatever the thought process, I hope कि चलिए एम्प्लॉयमेंट लग जाए. और पैसे तो आप लोग पहले ही ऑलरेडी कि उनको पैसे नहीं दे रहे थे, ये भी खबर आ चुकी हुई है. तो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो एटलीस्ट पे देम फॉर मैच फी ही दे दें अगर आपके पास मजीद पैसे नहीं है. एनीवेज उसामा, थैंक यू सो मच. आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी अबाउट फुटबॉल, क्रिकेट एंड एवरीथिंग, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. नेक्स्ट टाइम आप मुझे नहीं देखेंगे, डोंट वरी, आपको फिर अली आफ्ताब से ही मिलेंगे. ओके गाइज, बाय बाय.